Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher and I hope you are playing plus studying in your quarantine. आपके पेरेंट्स आपको होमवर्क लेकर गए थे स्कूल से the worksheets that we provided you और I hope आप लोगों ने उसको complete कर लिया होगा और अगर आपने नहीं complete किया तो please do complete them and submit it in the school. ठीक है और प्लस अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है you can ask me in the group in the WhatsApp group. Fine. Okay, so in order to continue your studies in this quarantine, I am starting this course book now, Bright Secondary English Book 1. You have to buy it and we are going to start this first chapter. This is a poem. This is unit number 1. It's a poem and we are now going to start reading this poem. आप लोग अपनी books आगे खोलेंगे और I'll read it out loud or I'll give you an overview out of it. Okay, so this is a poem. It's up to you. It's up to you का क्या मतलब है? Do you know that? It's up to you का क्या मतलब है? It's up to you basically means कि आप दूसरे बंदे को कह रहे हो कि you take this decision. आप ये फैसला करो. For example, I am giving you an example कि you wake up in the morning, ठीक है, और you just tell your parents, ask your parents कि मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ. So your parents says कि इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारा फैसला है. और फिर हमें उस फैसले को, अगर कोई आपको डिसीजन लेने को कहता है तो आपको एक जिम्मेदारी के साथ उस डिसीजन को लेना चाहिए. ठीक है, इफ इट इज अप टू यू सो इट्स अप टू यू. यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो मैं ठीक ले रही हूँ या मैं गलत ले रही हूँ. ठीक है, सो इफ इट्स अप टू यू इट्स टोटली अप टू यू. आपके ऊपर है कि आप अपना फैसला कर रहे हो तो यू शुड टेक इट राइट. ठीक है, अब हम अपने मैं पोएम को रीड आउट करूंगी. ठीक है, और उसमें से आपको मैं डिफिकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन कराऊंगी. और ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस पोएम. वन सॉन्ग कैन स्पार्क अ मोमेंट, वन फ्लावर कैन वेक द ड्रीम, one tree can start a forest, one bird can herald spring, one smile begins a friendship, one hand's clap lifts a soul, one star can guide a ship at sea, one word can frame the goal, one vote can change a nation, one sunbeam lights a room, one candle wipes out darkness, one laugh will conquer gloom, one step must start each journey, one word must start each prayer, one hope will raise our spirit, one touch can show you care, one voice can speak with wisdom, one heart can know what's true, one life can make the difference. You see, it's up to you. Okay, so the author of this poem is anonymous. We don't know, उसने अपना नाम नहीं लिखा, तो anonymous means no one. We don't know who has written the poem. ठीक है, okay. So मैंने पोएम आपके लिए रीड आउट की. आई होप आप लोगों को उसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि क्या मैंने आपको समझाने, क्या पोएम बेसिकली कहने की, पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उस पोएम में. दिस पोएम बेसिकली इज गिविंग अस अ पॉजिटिव मैसेज कि आप एक कदम उठाएंगे तो आप अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आप एक वर्ड, आप अगर एक वर्ड लिखते हैं, आप एक वर्ड से शुरू करेंगे तो कल को आप अपने गोल को फ्रेम करा सकते हैं. ठीक है, आप अपना गोल, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं. ठीक है,
तो आप एक वर्ड से शुरू करेंगे, आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो एट द एंड आपका गोल, आपकी जो डिग्री होगी, दैट कुड बी योर फ्रेम ऑन द वॉल। ठीक है, तो जो भी अगर आपने अपना गोल अचीव करना है, आपने अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, आप अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, डोंट गो बैक। अगर आपने अपना गोल अचीव करना है, डोंट गो बैक, इट्स अप टू यू। आपने अपना डिसीजन लिया है, ठीक है, आपने अपना डिसीजन लिया, यू आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। आप उस डिसीजन को कंटिन्यू करोगे, क्योंकि आपने वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है और आप उससे बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं करोगे। यू आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, इवन स्लोली। अगर आप स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता भी आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज इट वॉज योर डिसीजन, इट वॉज अप टू यू, ये आपका फैसला था। ठीक है, एक मतलब दैट द पॉइंट इज बेसिकली सेइंग कि एक अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक स्टेप से आप स्टार्ट करोगे तो उसको आप एंड तक कंप्लीट करो। ठीक है, आप अपनी ड्रीम लाइफ गुजारो, आप अपना जो भी आप करना चाहते हो, दैट इज जस्ट वन स्टेप अवे, यू टेक स्टेप टुवर्ड्स इट, यू विल अचीव योर गोल। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपने गोल्स सेट किए हों और यू आर बिकॉज इट वॉज अप टू यू, योर पेरेंट्स डिडंट इम्पोज इट ऑन यू। आपके पेरेंट्स ने आपको ये नहीं कहा कि आपने ये काम करना है, नो, इट वॉज अप टू यू। तो अब जबकि आपने अपना डिसीजन ले लिया है, तो फिर अब आपने उसको कंप्लीट करना है, उसको पूरा करना है। ठीक है, इंडिकेट, अब बेसिकली जो इट्स अप टू यू का मीनिंग है, that is basically your decision। ठीक है, आपने इट्स अप टू यू, you took this decision, that's it, now you have to complete, you have to accomplish the task of what you have decided। ठीक है, okay, so we are done with the poem reading now। I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें नहीं समझ आई, मैसेज मी इन द ग्रुप राइट नाउ, मैं आप लोगों को straight away आपको I'll tell you what I'll solve your problem। ठीक है, okay, now we are coming to the word meanings। in order to save time, मैंने आप लोगों के word meanings यहाँ पे already लिख दिए हैं। ठीक है, this is the word, this is the meaning। मैं आपको ये चीज़ pronounce करके, spell करके बताऊंगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही zoom करके, तो ask me, मैं आप लोगों को उसी टाइम आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, okay, first word is spark, SPARK, spark। स्पार्क का क्या मतलब होता है? चिंगारी। ठीक है, कोई भी अचानक से चिंगारी लगती है और आग लग जाती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ फायर। सॉरी, herald, sign that something is about to happen। हेरल्ड का क्या मतलब है कि कोई ऐसा साइन कि कुछ होने वाला है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे जाके बल्कि इसको एक्सप्लेन करती हूँ। द नेक्स्ट वर्ड इज हैंड क्लैस्प। यू क्लैप योर हैंड्स विद योर फ्रेंड्स, यू हाई फाइव विद योर फ्रेंड्स, लाइक यू हाई फाइव विद योर फ्रेंड्स, दैट इज हैंड क्लैस्प। बेसिकली कि आप अपने हैंड्स को क्लैप करें, आइदर विद योर बोथ हैंड्स और योर फ्रेंड्स हैंड। ठीक है, the next word is gloom। gloom means dark, अंधेरा। the next word is sunbeam, 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 ray of sunlight। this is the sun। ठीक है, so that is basically the ray of sunlight। for example, you wake up early, you wake up in the morning, आप सो के उठते हो, आपकी मामा अगर कर्टन्स हटाती हैं, सो दैट इज द सन बीम जो आपके ऊपर पड़ रही है, जो आपको सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, दैट इज द सन बीम। ओके, वी आर डन विद द वर्ड मीनिंग्स। देयर आर 5 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। आई होप आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पे साथ साथ लिख लिया होगा। अगर आपको इसमें से कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, आस्क मी राइट अवे, अभी पूछो मुझसे। ओके, देन the next question is the word sentences। I have written them down for you।
मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ. The first word is spark. SPARK, spark. Spark का क्या मतलब था? चिंगारी, फायर का स्टार्ट करना, फायर का स्टार्ट होना. A spark set the woods on fire. एक चिंगारी हुई, एक चिंगारी लगी, क्या हुआ? सारा जो वुड्स थी, जो लकड़ियां थी, सारी जल गई. ठीक है. सो बेसिकली स्पार्क इज द स्टार्ट ऑफ फायर, कि जैसे ही चिंगारी हुई और सारी वुड्स जल गई. हेरल्ड. हेरल्ड का क्या मतलब था? कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है. तो वन वर्ड कैन हेरल्ड स्प्रिंग. वन वर्ड कैन हेरल्ड स्प्रिंग. एक वर्ड है chirping, the bird is chirping, तो हमें होगा कि वाओ स्प्रिंग आ गया. मतलब ऑब्वियसली birds chirp in the winter as well, लेकिन जब स्प्रिंग आता है तो जब birds chirp करते हैं, that is a beautiful feeling. ठीक है. so spring is itself a beautiful feeling. Sunbeam. One sunbeam lights a room. वही है कि सुबह अगर फॉर एग्जाम्पल यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपकी मामा कर्टन्स को जो है वो साइड मतलब साइड पे करती हैं, एक सनबीम आता है, तो दैट सनबीम लाइटन्स अप योर रूम. आपको सनबीम की वजह से, उस सूरज की किरण की वजह से आपको पूरा कमरा आपका रोशन हो जाता है. ठीक है. द लास्ट वर्ड इज ग्लूम. GLOOM, gloom. His face was barely seen in the gloom. Barely का क्या मतलब होता है? Do you know that? Barely means के ना होने के बराबर. ठीक है. बिल्कुल ना होने के बराबर. तो उसका जो सेंटेंस मीन्स के उसका फेस जो है वो अंधेरे में ना होने के बराबर नजर आ रहा था. ठीक है. So this is the meaning of this sentence. I hope you understood this topic, you understood the poem, you understood its context, the word meanings, word sentences. Write them down in your notebooks. When you will come back to school, inshallah. So I'm gonna check your this work that you have done. Okay. So today's diary. Write down the diary. Okay, I'm giving you some words. You have to search their meanings in the dictionary and then write them down in your notebook. Okay? आपने dictionary में इनके search करने हैं words. The first word is vibe. और आपने इनके sentences भी लिखने हैं. Meaning बना के साथ sentence भी लिखना है. Clear? These are the 5 words: vibe, conquer, spirit, wisdom, begin. You have to write down the meanings and sentences of these words in your notebooks. Okay? This is your homework for today. I hope you understood this. और आप लोगों को नहीं समझ आए, ask me. और thank you so much and good luck for your studies. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें